So while we are moving ahead into the next section of this machine learning technique lab, and we have another target to go for some iris data. So we are working with the iris data, and we are taking up support, which is again with the open source platform. You can take an help from there. So this open source platform is basically available on the Kaggle, and what exactly we are trying to do, we understand it here, and how we are going to do it. Let's understand this. So we are having this visualization of iris data. We are working on the same one, and try to understand how it is going to work. So let's begin with this. And the same kind of a thing can be done on using a Python as well as an R. So we have a target to go for a R. So working with this one. So you can go for a open source platform as we have a target to go for. That is a very simple one. So we are working on this on the paper, and main you can have a groups of grids. You can work on also there. So here you have an option to work with. Similarly, you can work with the open source platform on the Kaggle, and another open source platform is the Geeks4Geeks. So here you can work for the iris data. So this iris data can be downloaded from here. The link is available. I'm going to share everything with you. This is absolutely recorded video, and you will be having these details available with you. Meanwhile, because we are going to do it with the help of practice one, so keep open first Google Colab. हम लोग Google Colab पर ही काम करते हैं, तो सबसे पहले आप Google Colab ही ओपन कर लीजिए. So here you have a data. You can easily download this iris complete data as it is there. So everything will be available in this one. Iris zip. It is completely covering the CSV file which we have a target. The zip file. Basically a kind of a data which we are looking for. I'm expecting it might be started as early as possible. So this iris underscore zip is available with us. We are going to explore it. And we got the data from here. Meanwhile, our Google Colab is ready, and we are exploring it. So there's a multiple and parallel operations are there. एक के बाद एक आपको सारे operations लेने होते हैं बटन को.
तो गूगल कोलैब भी ओपन करना है, डेटा भी लोड करना है, उसके साथ में आपको पार्लर डेटा को एक्सट्रैक्ट भी करना है, एंड एवरीथिंग इज देयर। तो ये सारे काम आपको एक साथ कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट अबाउट एक्सपेरिमेंट 5। सो iris zip इज हियर, एंड iris डेटा के ऊपर हम यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब तक ये डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, ऑल्दो स्मॉल डेटा है तो जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, पर यहाँ पर हम एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा archive and iris. So iris, this data set is completed with us. This is basically iris CSV file. Excel file हो गया आपको ये। This file is available. Iris CSV file is available with us. So that is what our target to get, and we got this file. Python file is there, and for your convenience point of view, I can show you. I can open it up. इसको हम show भी कर देंगे आपको. So well, this is now ready. Meanwhile, we rename it 151 experiment 5 iris. So let's create a object, and object is very much simple that we are taking from our syllabus. Our objective we are looking for, and how we are going to explore the iris data. Objective, explore the iris data set using Python programming language. Explore the iris data set using Python programming language. So next, starting with, we have this one, and most important first part. So whatever the file we are looking for, that should be uploaded here. So first, upload iris data set. तो पहला टारगेट है हमारा iris data set को अपलोड करना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं from google.colab. google.colab से इंपोर्ट करेंगे, import files इंपोर्ट की जाएंगी, and loading all these files, upload it. First to अपलोड करेंगे यहाँ पे अपलोड, when we are executing this one, now we are opening the file and chance to get the file to be uploaded. So let's choose your file. Take it for you. Wait. Yes.
entity file. It is in download, and in download this is iris j, and we are going for data, and this is iris csv. It is 100% done. So now the file has been uploaded. So now the task start. अब now you have a file ready with you. Iris data set जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये पैटर्न लेंथ पत्तियों की कुछ लेंथ के ऊपर का डेटा सेट है. अब ये जो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो now we are starting with the next one. Now this is basically our target to go with. अब हम इसके बाद में सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है, पांडा लाइब्रेरीज को इसको हम लिखते चलेंगे हैश import पांडा. यहाँ पर हमने पांडा को इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट किया पांडा को. पांडा एज पीडी नॉर्मल है, रीडिंग सीएसवी फाइल. अब सीएसवी फाइल को रीड किया, डीएफ के नाम से डिफाइन किया. अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, whatever the name has been given to the file, that has to be same one. So iris underscore csv is the name of our file, so only this name can be used. Got it? So this is the name of the file. You can change the name of the file over there, and you are going to get it out. So basically, is spell length, spell width, petal length, petal width, and the class. What kind of class is there? So iris is basically a kind of a petal length. पत्तियों के हिसाब से होता है. इसके different structure की ऊपर study की आती है. Define head. Head का क्या है? Starting की 5 row को आप define करना है तो define head कर सकते हैं. आप चाहें तो पूरा print कराना चाहें तो you can print the whole one. So there is no issue. The step number 1 is clear. So now what you have done, you have uploaded the pandas, uploaded the iris data set, and finally you will be able to read that data set, isn't it? This is basically we got here. Now let's check it out, what kind of a shape it has. Now हम इसका shape check करें. So we are going to work in another thing. Let's check the shape of the data. इस data का shape क्या है? 150,5. It means 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns are there and 150 rows are there. So it is giving you rows and columns. Got it? आपको यहाँ पे इसका shape पता चल गया. Now trying to get more info about it. What exactly the info? If you are looking to get the information, there's what the information we got. What kind of information we have, what entries, how many entries are there, how many data columns are there, non-null column कितने, counts कितने, data का type कैसा है, सब float है, object है, everything is there. So that you are getting in the form of info. Now you are looking to find out the describing the data. अब आपको data को describe करना है. Data की info हो गया, अब data को describe करना. So if you want to describe this data, so it is giving a perfect framework to you. That spell length, spell width, petal length, and petal width. How many counts are there? Mean, what is the mean? क्या है इसका standard क्या है? Minimum value कितनी है? 25% कितना है? 50% कितना है? 75% कितना है? इससे आप describe कर रहे हैं सारी values. But now you are looking to find out the missing values. अब आप missing values को check करते हैं कि है या नहीं. So इसको जो है हम यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू. Describe complete statistic of data. यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं हमारे पास null वैल्यू हैश check null values of data.
So basically it's given spell length is 0, spell width is 0, petal width 0, petal width 0, class इनमें से किसी में भी आपको कहीं भी नल वैल्यूज नहीं मिली तो उन्होंने बता दिया इनमें से किसी में भी नल वैल्यूज हमारे पास इन सबका अगर होती तो बता देते कि कितने काउंट्स हमारे पास नल वैल्यूज के आते हैं नाउ यू आर लुकिंग फॉर ड्रॉप द डुप्लीकेट वैल्यूज अगर इनमें से आप किसी की डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं so let's have a hash check dropping of duplicate values अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज मिलती है तो आप उनको ड्रॉप करेंगे एग्जांपल में स्पीसीज का लिया गया है बाकी चेक करेंगे एक एक करके you have to check कुछ अगर डुप्लीकेट है we have to drop it out so drop duplicate working missing data so let's say our data set contains any duplicate or not pandas drop duplicate method helps to remove duplicate data so we are looking to get the duplicate data structure from the data to check it out with some spelling whether it is available or not change our content from here so it could be possible like what things they had and you could not have that same one. So it is dropping out the basically if some values are there which can be of like a repeated one for this. It might be possible in their data set we have a species as well. So we do not have an R data as a species, so that's why it was dropped out. Species not different. So that's what the values are duplicated that are dropped out. Similarly, moving ahead, one can check easily. Now looking for like particular counts. अगर आप किसी count को चल रहे हैं, so let's check it out how we are going to have that counts. Hash counts the values. Their values count species because we don't have a species, so we can go for anything else like the data length. It can give us kind of values. How many times the petal lengths are 14? How many times of 1.12, 4.58, 5.18, 1.37 times? And similarly, that is basically 6.9 only the one times. So any count can easily be created, not only related to this one, you can do it for another one. Like I'm doing it for another
For the pattern length, looking for the size. Spell words. इसके लिए करके देखते हैं इसको स्पेल वर्ड के लिए. सारे कौन से स्पेल वर्ड के लिए ये आपके पास आज के. So one more thing. Now looking for the data visualization, and data visualization can be possible with the help of a matplotlib tutorial and the sequence. So we can have both one. दोनों ही लाइब्रेरी, तो दोनों लाइब्रेरी पे काम कर सकते हैं. So let's start with this one. दोनों ही पैकेजेस को हम इंपोर्ट करते हैं. तो ये यहाँ पर एक्सप्लोरिंग ऑफ द डेटा तक आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है. तो आप इस डेटा पे काम कर सकते हैं. अब आप अपनी, हमने आइरिस डेटा के ऊपर काम किया हुआ है, तो आप चाहे तो अपनी चॉइस का कोई भी डेटा पिक कर सकते हैं. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर. तो इतना सारा डेटा सेट हम आपको बार बार प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वो आइरिस का हो या सीएसवी का हो. तो सेम डेटा सेट हम आपके उसमें भी अपलोड कर देते हैं. कि जो ड्राइव है, हम ड्राइव पर भी वो डेटा सेट आपको अपलोड कर देते हैं. वहाँ पे आप इस डेटा सेट पे काम कर सकते हैं. तो हमारे पास तो बहुत सारा डेटा सेट अवेलेबल रहता है. आप उनमें से किसी भी डेटा सेट को, अपनी चॉइस की डेटा सेट को पिक कर सकते हैं और पिक करके आप यूज कर सकते हैं. अब जैसे इसी को आप रन करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट द अनदर डेटा. तो आई एम टेकिंग इट अगेन. नाउ यू हैव अ चांस टू अपलोड योर ओन डेटा. तो ठीक है, कुछ और डेटा चूज करके देखते हैं. चूजिंग फाइल अनदर फाइल, ये दो फाइल चूज कर लेते हैं. ये आइरिस फाइल हो गया. हमारे पास तो डेटा सेट की कोई कमी नहीं है. वी हैव अ प्लेंटी ऑफ अ डेटा सेट. यहाँ आर्काइव के अंदर ही बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है. आर्काइव 1 में देखिए कौन सा व्हीकल्स के ऊपर एक डेटा सेट पड़ा हुआ है हमारे पास. चेक कर लेते हैं. मेरे ख्याल से डेटा सेट बहुत बड़ा है. So it's going to take a lot of time. पर हमने पहले भी इसको ट्राई किया था और मच टाइम फॉर द अपलोडिंग पर्पस. नहीं में ये जब तक अपलोड हो रहा है, और आप देखेंगे 50 यहाँ पर आपकी फाइल बन मिनट. लेट्स चेक इट आउट. अगर आज की इंटरनेट स्पीड अच्छा हुआ और क्योंकि बिकॉज़ इट्स हैवी इन द बल्की डेटा, तो ये आपको ग्रुप में आपका ड्राइव में गए. सर स्क्रीन विजिबल नहीं हुई. आपका ड्राइव ओपन कर देते हैं. मेल चेक कर लेते हैं. सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आपकी. Taking very high time. So I can give this data to you as well. You can explore the data and find out what kind of a difficulties you are getting, whether how much time it is taking to add on that. And you can execute all these commands using this data set.
going to give this file to you as well. It's taking more than usual time. It's taking more than usual time. Still, it is not uploaded. You can see that how much heavy file this is, and you see 1, 2, 3. This one has an empty. 1, 2, 3. This, my goodness, this has become an GB. So it is, I suppose, a very heavy file. सर आपकी स्क्रीन So विजिबल that's why नहीं it हो is रही है. taking time. Yes, sir. Would you like to say something on this? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है. I'm sorry. I'm sorry. Yes, now you would be audible to me. There was some connection problem. Yeah. Would you like to say something? यस सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा. सब ब्लैक विंडो आ रहे हैं और अपलोडिंग वेट आ रहा है. हाँ, वही तो. ये ना. कुछ नेटवर्क इशू है. नहीं, अभी अब विजिबल है राइट नाउ. visible है. Good. See, I have already uploaded one data, iris data. That is very simple. लेकिन अब जो हमने vehicles.csv वाला फाइल डेटा लिया हुआ है, it is too heavy. So it is taking too much of time. हाँ, तो आप अपना कोई भी अपना खुद डेटा ले सकते हैं and you can test on the same kind of a thing. जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर करी हैं, वो सेम प्रोसेस आप अपने किसी और डेटा सेट के ऊपर भी ले सकते हैं और इस फाइल को रन कर सकते देख सकते हैं. सिमिलरली सेम फाइल को भी आप अपलोड करके देखिए गूगल कोलर में, आपके फोन में भी चल जाएगा. फोन में भी आप, मैं फाइल शेयर कर दूंगा गूगल कोलैब में, फोन में भी करके देखिएगा. ठीक है, श्योर सर. ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ. फाइन, थैंक यू. I'm going to download this file and this file will be available and all the things are available in the drive as well. सब कुछ ड्राइव पर भी है. ओके सर. मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ. इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए. सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे हैं, इजी हैं, सिंपल वे में. मैं इनका एक फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा. उसी फॉर्मेट में आपको सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने हैं. मैक्सिमम 2 और 3 लाइंस के कोड है, ज्यादा टफ कोड नहीं है. हाँ, वो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे. एक्चुअली दीज आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग स्टेप्स. तो जब ये स्टेप्स आप कर लेंगे तो जब बाद में फाइनली मशीन लर्निंग पे एक फाइनल प्रोजेक्ट तैयार करा देंगे, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. तो सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेरीज हो. सबका कॉम्बिनेशन सारी उसमें लाइब्रेरी फाइल्स अपलोड करा देंगे, नमपाई पे भी काम करा देंगे, पार्डास पे भी काम करा देंगे, मैटप्लॉट को भी ले लेंगे, सीबोर्न को भी ले लेंगे. इन सबको मिला के फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट तैयार करा देंगे द लास्ट. तो अपना ये हो जाएगा, सबका यूज हो जाएगा. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आपका. हाँ, ये फाइल भी आपका
आपके ड्राइव में पहुंच गया और आपके ग्रुप में भी आ जाएगा, और आज का जो सीखा है हमने उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, Sure, sir. आई एक्सपेक्ट दिस डन फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन? No, sir. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, sir. Okay, I'm stopping this session.